Good evening, students. NEET 2025 paper discussion. First question देखो बेटा. Sound waves में question पूछा गया था. The question was something like this: a pipe open at both ends. Open at both ends has a fundamental frequency. Has a fundamental frequency f in air. ठीक है? The pipe is now dipped vertically in water. Vertically in water to half of its length. To half of its length. Is asking the fundamental frequency. Fundamental frequency of the air column कितना होगा? Air column is equal to how much? Anyone बेटा? Simple question था. Question क्या था देखो? A pipe is open at both the ends. That means this is a pipe which is open at the both the ends. और इसका frequency कितना होता है बेटा? Right now, can anyone tell me what will be the frequency of this one in the open organ pipe right now for me? F is equals to frequency formula F भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं. So N is equals to V divided by 2 into your L. What is telling is the pipe is now dipped vertically in water. Now this one is dipped vertically in the water. अगर इसका length मान के चलो L है. Now this is vertically dipped into the water half. ये हो गया closed organ pipe जो ऐड करेगा ना बेटा अभी, isn't it? तो इसका लेंथ बन जाएगा right now for me L dash is equals to L divided by 2. तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? F dash लिखो या N dash लिखो, that is equals to V divided by 2 into this value will become how much for me? L divided by 2. Clear? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? Right now it is open at both the ends, isn't it? यानी यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हो गया ये वाला और इसका ये हो गया. तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मेरे पास लैम्बडा by 4 and this one is right now for me lambda by 4 यानी L is equals to lambda by 2, isn't it? So what will be the length? Lambda is equals to 2 times of your L हो जाएगा. Lambda is equals to 2 times. Frequency formula क्या होता? V is equals to N into lambda. So N is equals to V by 2 times of lambda था. तो ये हो गया V divided by 2 into lambda is how much for me? 2L. So ये हो गया V divided by 4L. Lambda, isn't it? यानी ये हो गया frequency when it is open V by 4 times of your L. Clear? तो अभी ये कितना हो जाएगा? Open at both the ends. Node to antinode का distance lambda by 4. Node to antinode का distance lambda by 4. V is equals to N lambda. N is equals to V by 2 lambda. Lambda कितना हो गया right now for me? Lambda by 4 plus lambda by 4. That will be equal to lambda by 2. Lambda is equals to how much for me? 2L. ये हो गया 4L. Fundamental frequency. When it is immersed in the water. When it is immersed in the water, इसकी fundamental frequency बन जाएगी N dash is equals to V divided by, sorry. So it is right now for me V divided by 4 into your right now for me L dash, isn't it? ये 2 क्यों है यहाँ पर? ये 2 नहीं आएगा ना, सॉरी. This will be V by lambda. Lambda is equals to 2L. तो ये कितना हो जाएगा? V by 2L ही होगा. So this will be equal to N is equals to V by 2L when it is in air. So frequency in air का फॉर्मूला हो गया V divided by 2 times of your L. ठीक है? When it is immersed in the water, now length will become how much for me बेटा? Lambda by 4. Length will become L by 2 right now for me. तो ये हो गया मेरे पास closed organ pipe ऐसा कुछ बन जाएगा. तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इसका length. तो ये लेंथ विल बिकम फॉर मी लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 यानी L डैश इज इक्वल्स टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4. लैम्बडा इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया इससे, लैम्बडा इज इक्वल्स टू योर 4 टाइम्स ऑफ योर L. Okay, L dash. So that is equals to right now
4 into L dash will become how much for me? L by 2. 2 ones are 2 twos are. तो ये कितना हो जाएगा 2L. तो fundamental frequency will become how much for me when it is in immersed in water? N dash is equals to V divided by, again this is coming out for me. वो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ रही? 2L. N dash is equals to V by lambda dash. That is equals to V by 2 times of your N. यानी F dash N in air will be equal to N in water when it is been closed. यानी दोनों की frequency same रहेगी बेटा. F will be equal to your F dash. F will be equal to your F dash. This must be the answer for that. Clear? हो गया बेटा? सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मैंने क्लास में भी करवाया था बेटा, बहुत बार करवाया था. मेरे पास एक सर्किट दे रखा था ऐसा एक्चुअली. राइट नाउ राइटिंग द क्वेश्चन. AB is a part of electrical circuit. Okay, the potential difference VA minus VB at the instant when I is equals to 2 ampere and is increasing at the rate of 1 ampere per second is. Okay, I'll give the options. First option दे रखा है 9 volt, second option दे रखा है 10 volt, third option दे रखा है 5 volt, and fourth option दे रखा है 6 volt. And diagram is given something like this. There is an inductor like this, and there is a battery positive negative, and there is a resistance. This is a terminal P, this is your terminal A. Okay, and इसका L दे रखा है 1 Henry, उसका पोटेंशियल दे रखा है 5 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन इज 2 ohms. देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट इन दिस वन I एम्पियर राइट नाउ. ठीक है. व्हाट इज द रोल ऑफ इंडक्टर बेटा? इंडक्टर will act as of an opposing element. और यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? It is increasing at the rate of 1 ampere. Increasing मतलब इंडक्टर will not allow it to increase. That means this can be redrawn as something like this. One positive here, one negative here, again positive here, and there is a resistance, right? This is a terminal P, this is a terminal A. So you have positive, there is a flow of a current, how much for me? 1 ampere through this one. और इसका potential हो गया 5 volt और इसका resistance हो गया 2 ohm. So write the potential formula, Kirchhoff voltage law. VA minus VB is given how much for me? But right now we need to calculate VA minus VB. Starting from potential A, VA, going in the same direction, so it will be equal to minus. ओके, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसका इंडक्टर कितना हो जाएगा बेटा? E इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया E. E का फॉर्मूला क्या है अपने को? E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ L इनटू DI डिवाइडेड बाय DT. माइनस इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन बेटा, टेक इट एज पॉजिटिव. L is 1, DI by DT is also equal to 1. So that is how much for me? 1. Okay, so this will be equal to positive negative. जहां पर end हो रहा है, that I am taking as a sign convention, minus EMF of the inductor is right now for me 1. Isn't it? Then how much amount of the current has been flowing from that one beta? From this one again positive negative, so it will be your negative of your 5 EMF of the battery. Then same amount of current is flowing right now for this one, so it is minus. Current is right now for me 1 into your resistance is how much for me? 2. So current is given as 2 amperes beta. So current is given as of your 2 amperes into resistance is 2. That will be equal to VB. So it is VA minus 1 minus 5 minus 4 is equals to VB. VA minus VB कितना आ रहा है देखो बेटा? VA minus of VB will be equal to minus 1 minus 5 minus 6 minus 4 10. So it will be equal to minus 10, उधर चले जाएगा तो 10. So VA minus VB will be equal to your 10 volt. आ गया? Am I clear? That was very simple question. ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रहे थे. सेम मॉडल, डिटो मॉडल हम लोग ने क्लास में डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी बेटा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था देखो राइट नाउ. See, I'm not having any technical
help to take the question paper, cut and paste. That is the reason I need to write the questions. Okay. थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछा गया था एंड दिस वाज आल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन, 90% बच्चे कर चुके होंगे. ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस capital R is cut into 8 equal pieces. 8 equal pieces. Now see, from these pieces, two equivalent resistance are made by adding 4 wires. By adding 4 of these together. ठीक है? In which combination? Parallel combination. Question को समझो, आसान question है. Okay. Then these two sets are added in series. Are added in series. So the net effective resistance of the combination is. Okay. ऑप्शंस दे रखा है, देखो इसको. ए भी रेगुलरली मेटल में मिलने वाला क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्टली मेटल में का क्वेश्चन है. इट इज R by 16, R by 8, R by 64 and R by 32. पहले क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन क्या बोला देखो, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस R. मेरे पास एक वायर है, मेरे पास एक वायर है. दिस रेसिस्टेंस इसका कितना है? R. ठीक है. ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ योर R is cut into 8 equal parts. इसको मैंने 8 equal parts में कट किया. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो एक एक का रेजिस्टेंस कितना बनेगा बेटा? जब एक का बनेगा R by 8. ठीक है ना. उसके बाद उसने क्या बोला, these two pieces cut into 8 equal pieces. From these two pieces, two equivalent resistance are made adding 4 of them together in parallel. Okay, यानी 4 को मैंने एक बनाया और 4 को मैंने एक बनाया. 4 of these them taking together. तो अगर मैंने 4 एक साथ ले लिया तो क्या हो जाएगा? If I'm taking 4, so R by 8 into 4. चलिए, sorry. So R by 8, तो मैंने 4 ले लिया साथ में, यानी R by 8 plus R by 8 plus R by 8 plus R by 8. ऐसा, isn't it? तो एक के कितना बन जाएगा बेटा? All of them I can add them right now for that one. What's the combination? From these two equivalent resistance are made by adding 4 of them together in parallel. अच्छा, पूरे parallel में है. तो ये कितना बन जाएगा बताओ? All of them are being added by parallel, यानी R by 8. I told you all of them are same. R in parallel will become for me R divided by L. So ये कितना हो गया? R by 8 divided by this will be equal to 4. 4 8s are 32. So it is R by your 30. Okay. Now these two sets are added in series. ऐसे कितने सेट्स है मेरे पास? 2 सेट्स है. So right now एक सेट का हो गया R by 2 और एक सेट का हो गया R by 32. These two together are been added in series. तो इन दोनों को मैंने सीरीज में ऐड कर दिया. This is terminal B, this is terminal A. So it is R by 32 and this is R by 32. यानी R in series का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? R1 plus R2. So it is your R by 32 plus R by 32. यानी n times of R बन जाएगा, यानी R by 32 into 2, isn't it? तो कितना बन जाएगा? कितना हो गया बेटा? Very good. R by 16. बस हो गई बात. आई बात समझ में? क्वेश्चन हमें क्लियर? कितने क्वेश्चंस क्लियर? 3 क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स का है. मैंने 1 से 4 बार दुनिया भर बोला था कि प्लीज ट्राई टू व्हाट यू कॉल दैट वन, go through the formulas of the optical instruments. 2-3 बार मैंने आप लोगों को बताया था. I don't know whether you have gone through or not.
चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। ए माइक्रोस्कोप डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, खाली फॉर्मुला याद होना था आप लोगों को। ए माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव of focal length 2 centimeter, eyepiece of focal length 4 centimeter, and tube length of 40 centimeters. If the distance of the distance of distinct vision of eye is 25 centimeter, the magnification of microscope. Now, options given are 150, 250, 100, 125. कौन सा माइक्रोस्कोप है? A microscope and objective, and a microscope and objective of focal length. Focal length of your objective is equals to 2 centimeter, and focal length of eyepiece is equals to 4 centimeter. Tube length is 40 centimeters, and distance of distinct vision is 25 centimeters. Okay, what is the magnification of this one? Magnification को फॉर्मूला तो याद होगा आपको, m is equals to l divided by f naught into d divided by focal length of eyepiece for a compound microscope. क्योंकि माइक्रोस्कोप बोल रहा है, isn't it? सिंपल नहीं होता, ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ दोनों है यहाँ पर, तो m is equals to l divided by f. l की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 40 centimeter. Focal length of objective is right now for me 2. Least distance of distinct vision is 25 divided by focal length is right now for me 5. Simple. So this is 4 ones are, this is 4 tens are, 2 ones are, 2 fives are, isn't it? So it will be 5 into 25. 25 fives are 125. That will be the answer. कितना simple question था? हमें क्लियर? चलो और एक क्वेश्चन देख लो। फोर्थ क्वेश्चन था ये वाला, फोर्थ था। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ क्वेश्चन। ये देखो राइट नाउ फॉर मी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल देख वेन फॉर मी, जस्ट अ मिनट बेटा।
Am I clear, बेटा? सॉरी माइक जब से आप में था। सो फर्स्ट वन था साउंड वाला क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फॉर्मूला क्या था? एन इज इक्वल्स टू वी बाई टू एल। व्हेन इट इज डिप्ड इनटू द वाटर, इसका लेंथ बन जाएगा आधा। सो व्हेन इट इज बिकमिंग हाफ, इन डैश विल बिकम हाउ मच? वी बाई टू एल। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, इट विल बी नॉट चेंज। सेकेंड वन देखो, ए बी इज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, हम लोग ने क्लास में एज यूजुअली किया था। करंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट बोल रहा है, तो इंडक्टर विल नॉट अलाउ इट टू इंक्रीज। तो एट द टाइम दिट विल बी अपोजिंग एज पर द लेंस लॉ। इंडक्टर को हम लोग निकाल के वी आर कनेक्टिंग विद द बैटरी विच इज कैन अपोज, पॉजिटिव आ रहा है। तो इट इज द रीजन आई एम राइटिंग हियर द किरचॉफ सेकंड लॉ VA, जहां पर एंड हो रहा है दैट आई एम टेकिंग द साइन कन्वेंशंस राइट नाउ फॉर दिस वन। सो इट इज -1, माइनस इसका पोटेंशियल हो गया माइनस, करंट कितना जा रहा है इसके अंदर 2 एम्पियर। सो इट इज राइट नाउ 2 into 2 दैट विल बी 4, दैट इज VB। सो VA माइनस VB सिंपलीफाई कर रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू योर 10। देन उसके बाद वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज बीन कट into 8 इक्वल पार्ट्स। देखो मेरे पास एक वायर ऑफ रेजिस्टेंस था R, इसको मैंने 8 पार्ट्स में कट कर दिया, तो कितना आ गया R by 8। नाउ यू नो दैट व्हेन दे आर बीन कनेक्टेड इन द पैरेलल और सेम है, तो R in parallel is R by n, so R by 8 divided by 4। उसने प्रॉब्लम में बोला 4 वैसे वाले कनेक्ट करा हुआ है। सो ईच का कितना हो गया R by 32। तो 2 सेट्स बनाया, R by 32 का एक, R by 32 का एक, और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सो व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज R1 plus R2। So R by 32 plus R by 32, it will be your R by 16। सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, मैंने बहुत बार क्लास में बोला था फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम, लास्ट मोमेंट में आप लोग एक बार डिवाइस कर लीजिए। माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ 40 सेंटीमीटर, and if the distance of the distant vision is 25 centimeter, the magnification of microscope will be equal to how much? M is equal to L divided by F naught into D by FE। लेंथ कितना है मेरे पास 40 है, isn't focal length of object कितना है 2 है, least distance of distant vision 25, focal length of eyepiece is 5। इसको सिंपलीफाई कर लो, we'll be getting it as of your 125। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला पूछा है बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट दे रखा है 5 into 10 power minus 6 is aligned with the direction of uniform electric field of magnitude 4 into 10 to the power of 5 Newton coulomb। The dipole is been now rotated to an angle of 60 degrees with respect to the electric field। The change in the potential energy पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा? वन ऑफ द नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज कॉम्बिनेशन डाइपोल होता है। डाइपोल का फॉर्मूला P is equal to Q into 12, इसकी वैल्यू दे रखा है 5 into 10 power minus 6। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है 4 into 10 to the power of 5, थीटा दे रखा है फाइनली 60। And you know the potential energy formula is right now for me minus of P into sin theta। Initial angle कितना है 0 degrees। Initial potential energy is minus of P into sin 0, that is 5 into 10 power minus 6, 4 into 10 power 5। फाइनल में कितना है? थीटा वैल्यू 60 डिग्री से। यू फाइनल इज माइनस ऑफ पी इनटू sin 60। पी की वैल्यू दे रखा है, ई की वैल्यू वालों है, sin 60 इज 1/2, इट इज यूई डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपलीफाई कर लो। सो ये 2 1 में चले जाएगा, 2 2 में, तो ये चले गया 2। 5 into 2 this is 10, 10 into 10 power minus 6 into 10 power 5, 10 power 5 into 10 is nothing but 10 power plus 6, 10 power minus 6। तो ये कितना हो जाएगा 1 into 1 1। so this will be equal to 1। तो क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन हो गया है क्वेश्चन नंबर 5। 6 क्वेश्चन। Two identical I'm audible? Two identical चार्ज कंडक्टिंग, ये भी हम लोग क्लास में बहुत बार कर चुके हैं। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B have their centers। मिडल में मिल जाता है बेटा ऐसे क्वेश्चंस, मैक्सिमम हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मिडल में मिल जाता है। इज बीन सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, by a certain distance। Charge on each sphere is Q, and the force of repulsion between them is F। ठीक है। The third identical uncharged conducting sphere, okay, is brought in contact with sphere A first
and then with B, and finally removed from both. Finally removed from both. New force of repulsion. New force of repulsion between spheres A and B. Okay, radii of A and B are negligible beta compared to distance of the separation for calculating force between them. So he's asking that the force of repulsion between them is how much? First option is given as F by 2. Second option is 3F divided by 8. Third option is 3F divided by 5. And fourth option is given as of your 2F divided by 3. तो पहले क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन क्या बोला? Two identical charged conducting spheres. Okay, this is a two identical charged conducting spheres. A and B have the centers separated by a distance. A center और A center they are being separated by certain distance. मान के चलो D लिखो या R लिखो, one is the same. And charge on each is given as इसके ऊपर charge Q है, इसके ऊपर charge Q है, and the force between them is F. तो इन दोनों के बीच में तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्शन हो जाएगा. F is equals to 1/4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divided by D square. This is the formula, isn't it? So F is equals to 1/4 pi epsilon naught को मैं K लिख रहा हूँ, चार्जेस सेम है तो Q square divided by D square. ये हो गया इनिशियल केस. ठीक है ना? अब क्या बोल रहा है? नाउ द फोर्स ऑफ द रिपल्शन बिटवीन देम, थर्ड आइडेंटिकल चार्ज. मेरे पास थर्ड वन है राइट नो, ये थर्ड स्फीयर है सी. ये थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द स्फीयर. ये पहले इसके पास लेके गया, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही ये मिलेंगे तो देयर विल बी शेयरिंग ऑफ द चार्जेस बिटवीन देम, isn't it? So what is happening right now for that one? So दोनों के बीच में क्या होगा? शेयरिंग ऑफ चार्जेस हो जाएगा. कितना हो जाएगा? Q and Q. अब ए के पास चार्ज, इसको दोनों को मैंने अटैच किया, तो ये दोनों के ऊपर मिला के चार्ज कितना रहना चाहिए था मेरे पास? Q. A and C दोनों मिला के they're sharing the charges. Total charge on this one is always conserved. तो ये Q ही होगा बेसिकली, isn't it? तो उसने क्या बोला है? थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद स्फीयर ए फर्स्ट एंड देन विद बी. ओके, तो पहले उसने ए से कांटेक्ट किया, फिर उसको निकाला. तो जब निकाल दिया तो ए के पास कितना बचेगा बेटा राइट नाउ? Q/2, क्योंकि C तो Q/T लेके चले गया. अब ये C/2 लेके जाके क्या कर रहा है? B को अटैच कर रहा है. नाउ व्हेन इट इज अटैचिंग टू द B, सेकंड केस में, अब ये दोनों दोस्त बन रहे हैं यहाँ पर, B एंड एज वेल एज ऑफ C. B के पास ऑलरेडी चार्ज Q है, C के पास चार्ज कितना है? Q/2. अब दोनों को मिला कितना चार्ज बना? 3Q डिवाइडेड बाई ओवर 4. आ गया, isn't it? निकालने के बाद बोल रहा हूँ राइट यहाँ पर, isn't it? So it is Q plus Q/2. पहले 3 Q by divided by 2 हो जाएगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. तो मैं क्या कर रहा हूँ? पहले जब अटैच किया हुआ था, so it will be Q plus of your Q/2, यानी 1 plus 1/2. This will be equal to 3/2 times of Q. फिर उसके बाद सेपरेट कर दिया, बोला उसने, मैंने इसलिए डायरेक्टली लिखा था. Now what is telling is brought in contact this pair A first, then with the speed B and finally remote. तो फाइनली जब निकाल दिया तो B के पास जो चार्ज बचेगा अभी 3Q डिवाइडेड बाई 2 का आधा बनेगा, यानी दिस इज 3Q डिवाइडेड बाई 4 आ गया. तो अब अल्टीमेटली ए के पास चार्ज कितना है बेटा? Q/2. और बी के पास चार्ज कितना है राइट नाउ फॉर मी? 3Q डिवाइडेड बाई 4. दोनों को फिर से सेम सेपरेशन के पास रखा हुआ है. तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा? F डैश इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और D स्क्वायर, जो भी है. दोनों के बीच में डिस्टेंस D लिखो या R लिखो. तो थोड़ा लेंथी है बट करना वाला क्वेश्चन है, जनरली क्लास में टीचर्स रेगुलरली कराने वाले क्वेश्चन है. सो इट इज के Q1 is right now here Q/2 and this one is 3Q divided by 4 divided by, पहले मैंने D लिया था तो मैं D स्क्वायर लिख रहा हूँ. तो ये बन जाएगा मेरे पास K into this value will be equal to K into Q square divided by D square. ठीक है ना? So this next one is right now for me 1/2. तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 and this is 4 2s are 8. So this will become for me 8. So this will be 3/8 times of Q वाला, A वाला कितना हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा. So 3/8 divided by 4 होना चाहिए ऑप्शन. So it is right now for me 3F divided by 8. 3F divided by 8. Second option will be the answer. आई बात समझ में? I hope you are clear with this one. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास में रेगुलरली हर टीचर कराता है बेसिकली. विच ऑफ दी
following options represent the variation of photoelectric effect. The variation of your photoelectric current with property of light shown on the x-axis. फर्स्ट वन देखो बेटा, ग्राफ ऐसा दे रखा है. ऑन दिस वन फोटो इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है और यहाँ पर इंटेंसिटी दे रखा है एंड ग्राफ इज लाइक ए स्ट्रेट लाइन. सेकेंड वन इज अगेन यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है एंड यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इट इज कांस्टेंट. थर्ड वन है राइट नाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी और उसका ग्राफ दे रखा है स्ट्रेट लाइन. और फोर्थ वन इज राइट नाउ फॉर मी, यहाँ पर हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पर हो गया राइट नाउ फॉर मी इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ऐसा सो नो आपने पढ़ा होगा वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बल्ब की इंटेंसिटी से. जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते रहोगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते रहेगा. सो फर्स्ट ऑप्शन देखने के साथ ही टिक किए होंगे मैक्सिमम बच्चे, बाकी के देखने की भी जरूरत नहीं है. फ्रीक्वेंसी के साथ तो चेंज होगा तो कांस्टेंट नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट नहीं होगा बिकॉज एज द इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इंक्रीजिंग. तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग. सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट नाउ फॉर मी. क्लियर है? डन बेटा. हम लोग ने एसी के लिए भी रिवीजन करे थे अच्छी तरह से. मैं एक एसी का क्वेश्चन भी ले लेता हूँ. देखो, टू एन एसी पावर, when AC power supply of 220 volt at 50 hertz, a resistor of 20 ohm, 20 ohm, a capacitor of reactance 25 ohm, and an inductor of reactance 45 ohm are connected in series. Are connected in series. The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and voltage. Current and voltage is how much? ये वाला क्वेश्चन. ऑप्शन देखो इसके लिए क्या क्या दे रखा है, हम लोग ने क्लास में रिवीजन किए थे. ये 15.6 एम्पियर एंड 30 डिग्रीज दे रखा है एक ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज 15.6 एम्पियर एंड 45 डिग्रीज दे रखा है. थर्ड ऑप्शन इज 7.8 एम्पियर एंड 30 डिग्रीज दे रखा है. फोर्थ ऑप्शन इज 7.8 and 45 degrees there. Done. चलो ट्राई करो जल्दी से. To an AC power supply of 220 वोल्ट, तो ये हो गया AC पावर सप्लाई. इसका पोटेंशियल है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज. A resistor of 20 ohm, resistance is given for me 20 ohm. Capacitor of reactance यानी XC is equals to 25 ohm. The inductor of reactance यानी XL is equals to 45 ohms are connected in series. तो ये मेरे पास एक रेसिस्टर है, फिर उसके बाद कैपेसिटर है, फिर उसके बाद इंडक्टेंस, यानी ये हो गया LCR सर्क्यूट. ओके, LCR सर्क्यूट के अंदर XL is dominating. ओके फाइन. तो XL माइनस XC लिखेंगे यहाँ पर नेट रेसिस्टेंस.
एंड ये हो गया R. The corresponding current will be equal to your how much Fermi. Okay. So now if I'm talking about phasor diagram for that one, I already told you resistance should always be taken on x-axis. So कितना है 20 ohm resistance. और inductance is XL. XL is equals to 45 and XC is equals to 25. यानी नेट कितना बन जाएगा XL minus XC दोनों रेजिस्टेंस ही है ना बेटा. So 20 45 minus of your 25. उसके बाद एक्स एक्सिस तो नेट कितना बन जाएगा 20 ओम्स ऊपर बनेगा और यहाँ पर 20 ओम्स बनेगा यानी नेट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच वन. तो ये बन गया 20√2. मेक एन एंगल ऑफ योर 5, isn't it? तो tan phi की वैल्यू बता दो सीधा. tan phi is equals to tan phi is equals to your 20 divided by 20. तो ये हो गया मेरे पास 1. तो phi की वैल्यू आ गई 45 डिग्री. अब बाकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही मुझे को. 45 डिग्री तो एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट वाला चले गया थर्ड वाला चले गया तो दो ऑप्शन में 45 दिख रहा है तो आई नीड टू डू इवन करंट राइट. ओके चलो करंट निकालो. I is equals to V divided by your impedance. That is nothing but equal to your resultant impedance. That is nothing but Z. V is given for me 220 volt divided by Z is equals to 20√2. A2 चले गया 2 once. So it is right now for me 11 divided by root 2. So it is 11 divided by root 2 is right now for me 1.414. So 14.4. कितना आ रहा देखो right now for this one. Is 11 divided by 1.4. So it is approximately 7.8 ले रखा मैंने कैलकुलेटर यूज किया हुआ बेटा. Ampere तो 7.8 will be the answer. 7.8 and 5 amperes will be the answer. Clear? Sure. I hope I'm clear with this one. Sure. लॉजिक गेट का भी क्वेश्चन हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया था. एक बार लॉजिक गेट का क्वेश्चन कर लेते हैं. देखो बेटा द आउटपुट सभी लोग करे होंगे y of the given logic implementation is similar to is a given diagram for me. Yeah, and get it. दोनों का आउटपुट is connected again and get like this. ये हो गया इसका आउटपुट y. यहाँ पर हो गया इनपुट ये. ये हो गया इसका एक इनपुट ये. दोनों का सिमिलर इनपुट यहाँ पर दे रखा है b. ठीक है ना. ये नॉट है ये नॉट है. This is output y. Options given for me are OR gate, NOR gate, AND gate, and fourth one is NAND gate. देखने के साथ ही बोल दिए होंगे बहुत सारे बच्चे. I hope how much of this one A और इसका इनपुट इज राइट नाउ फॉर मी B यानी A प्लस B होगा. नॉट है तो B बार. तो ये AND गेट है राइट नाउ फॉर मी इट इज A डॉट B. इसका भी नॉट हो गया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी A प्लस B बार डॉट एंड A B. तो ये कितना हो जाएगा बेटा A प्लस B बार विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी. इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ मैं बेसिकली. तो इट विल बी A प्लस B प्लस ऑफ योर A डॉट B पूरा बार लिख सकता हूँ. तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो A डॉट इंटू A डॉट विल बी इक्वल टू 1 यानी A प्लस B बार हो जाता है. A प्लस B बार मतलब सीधा सीधा नॉट गेट. तो सिंपल क्वेश्चन डन बेटा. और देखो हम लोग वेव ऑप्टिक्स भी प्रैक्टिस कर रहे थे. तो आई जस्ट वांट टू सी दैट हाउ वाज द क्वेश्चन ऑन द वेव ऑप्टिक्स. एक बार मैं चेक करता हूँ वेयर इज दिस क्वेश्चन ऑफ योर वेव ऑप्टिक्स.
मॉडर्न फिजिक्स के तो पूरे सिंपल क्वेश्चन ही थे बेटा। वेव ऑप्टिक्स से दो क्वेश्चन पूछे थे, दो क्वेश्चन के दो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ही थे बेटा, आपको करने चाहिए थे। दोनों हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन डन विद दैट वन और नॉट। एक तो मैंने क्लास में भी करवाया था ये वाला क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन डन, एक बार देख लो जल्दी से। आई राइट द क्वेश्चन। द इंटेंसिटी of transmitted light when a polarized sheet is placed between two crossed polarites, okay, at 22.5 degrees from the polarization axis, okay, of one of the polarites. Okay, is I naught is intensity of the bracket दे रखा है, intensity of your polarized light after passing through the first polar. Good question. Options देखो, I naught divided by 8, I naught divided by 16, I naught divided by 2, I naught divided by 4. चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ो एंड ट्राई टू डू इट। बस में चार्जिंग नहीं है बेटा, चार्ज कर रहा हूँ, सो जस्ट आ गया। माइनस का लगाना है बेटा। The intensity of a transmitting light when a polarized sheet is been placed between two crossed. तो देखो अगर मैं पोलराइजर का फॉर्मूला लिखूं, दिस आर योर पोलराइजर्स एंड दिस आर योर एनालाइजर्स। यहाँ पर अनपोलराइज्ड जब होगा, that will be your dot and cross. I naught is intensity of your polarized light after passing through the first polarite. Okay. तो ये पोलराइजर का सिंबल है बेटा, ये एनालाइजर है बेसिकली मेरे पास। अब इन क्या बोल रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग लाइट व्हेन द पोलराइज्ड शीट्स आर बीन प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइट्स एट एन, दोनों के बीच में जो एंगल होगी, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो एंगल होगी, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 22.5 डिग्रीज। यानी रिमेनिंग एंगल कितनी हो जाएगी बेटा, इट विल बी 90 माइनस, बिकॉज क्रॉस्ड है ना बेटा, सो इट इज 90 माइनस 22.5। सो 22.5 कैसे लिख सकता हूँ मैं, 45 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी 90 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें से जब इंटेंसिटी जा रही है, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, I1 is equals to intensity will be polarized, that is I naught divided by 2 into cos square, this is 45 divided by 2। और I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 वैल्यू विल बी इक्वल टू योर I1 into this one is sin square, why sin square, 90 minus theta, so this will be equal to your 45 divided by your 2, isn't it? ये वाला
तो ये हो जाएगा I2 इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू डाल दो, इट इज I0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2 into your this one is right now for me sin square 45 divided by 2. This is like 2 sin theta into cos theta का फॉर्म हो जाएगा. So this value will be equal to your sin 2 theta का फॉर्मूला में लिखो. So it is I0 divided by 2 into your. So this value will become for me 4 into your cos square 45 divided by 2. And this value will be equal to I0 by 2 into 4 into cos square 45 divided by 2 will be equal to your 2 cos sin 2 theta का फॉर्मूला जो है ना वो फॉर्म में लिखा है cos square 2 theta. यानी this value will become for me sin square 45 divided by 2 divided by your 4 sin square theta. ठीक है ना. आई बात समझ में. I0 by 4 इसके यहाँ पर डिटेल में लिख देता हूँ. cos square theta sin square theta को एक्सपेंड कर लेना है बेटा मेरे पास टाइम. ठीक है. So this value can be written as right now for me I0 divided by 2 I0 divided by 2 into this value will become for me 2 sin theta into cos theta. कितने फॉर्म में आ जाएगा देखो बेटा. This value will become for me 1 by 4 and this value will become for me I0 divided by 8. This will be expand. ठीक है. चलो है ना बेटा. क्या चलो फिर बच्चे पूछ रहे हैं कैसा है. कुछ नहीं करो बेटा इसको क्या करो I0 by 2 है ना लिख रहा हूँ रफली इसका एक्सप्लेनेशन. I0 by 2 इंटू उसको 4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लो. cos स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कितना हो गया sin स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4. वो क्या है मन. सो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा तो कितना बन जाएगा 1/4 वैल्यू आ जाएगी ऊपर. 2 है ना बेटा इसलिए लिखा हूँ. सो इट इज I0/8. समझ में आया. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 meters. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meters. The impulse imparted to the ball during its collision with ground. During its collision with ground. In the bracket, G is equals to 9.8 meter per second square. ठीक है. Good question है बेटा. I'll give the options. Options क्या दे रखा है 0. Next one is 84 Newton second. And third option is given as 24 Newton second. Fourth option is given as 7 Newton second. चलो ट्राई करो. पहले इम्पल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए था. मेरे पास क्या क्या डाटा दे रखा है देखो राइट नाउ इन द प्रॉब्लम. मास दे रखा है 0.5 kg is dropped from a height h is equals to 40 meters.
ball hits the ground and rises to a height, ये h1 है. Then second case में when it is rising, h2 कितना है 10 meters. Impulse पूछ रहा है. Impulse का फॉर्मूला क्या बेटा? Impulse is equals to change in momentum. That is nothing but m into delta v. That is m into v final minus v initial. ठीक है ना. फर्स्ट केस में बॉल ड्रॉप है, तो यहाँ पर मेरा ग्राउंड है, यहाँ से एक बॉल ड्रॉप किया हुआ है. Initial velocity is 0 and it is coming and hitting the ground. So it is hitting the ground with velocity v1. v1 निकालो, तो v1 will be equal to, फॉर्मूला क्या है? v1 is equals to under root of 2g into h, क्योंकि हाइट दे रखा है 40 meters. So it is 2 into g की वैल्यू approximately I'm taking it as of your 10 for calculation purpose, or you can take anything, that's not a problem. 9.80 ले लो into your 40, because in the g 9.8 लो रहा है. The next case में क्या बोला? It is been raised. यहाँ से right now again it is been rising. So height of your how much for me? h2. So यहाँ पर हो गया v2. v2 is equals to under root of 2g into your h2. तो g into your h2. इसको निकालो, under root of 2 9.8 into h2. h2 is right now for me 10 meters. ठीक है ना. तो ये कितना हो जाएगा? देखो, अंडर रूट ऑफ इट इज 2 into 98 डिवाइडेड बाई 10 into 40. ये वाला चले गए. दिस इज अंडर रूट ऑफ योर 2 into 980 डिवाइडेड बाई 10 into 10. ये वाला चले गया. इज रूट ऑफ 2 into 98 हो गया. दिस इज अंडर रूट ऑफ योर 4 to 8 into 98 हो गया. ठीक है ना. तो इम्पल्स निकालो राइट नाउ फॉर दिस वन. एक तो नीचे आ रहा है, अनदर इज गोइंग ऑपोजिट, बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट, तो ये प्लस बन जाएगा. सो इम्पल्स विल बी इक्वल टू योर m इनटू दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू v फाइनल. अगर अपवर्ड हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, I'm leaving the calculation for you. So v final minus of v initial. तो ये बन जाएगा मेरे पास I is equals to m into v final plus v initial. मास दे रखा है 0.5, that is equals to 1/2 into your, this value will be equal to your v final कितना है? √2 into 98 plus this one is right now under root of your 8 into your 90. इसको सिंप्लीफाई कर लो, that will give me the answer. डन बेटा. डन बेटा. ये कितना आ रहा है? 20 into √2. हाँ, वेरी गुड. नेक्स्ट वाला कितना आ रहा है बेटा? व्हेन इट इज गोइंग अप, दिस वन इज 10 into √2 अप्रोक्सीमेटली. जी की वैल्यू मैं ले रहा हूँ बेसिकली. समझ लिया? इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो इट इज 1/2 into 10 into √2 plus 20 into √2 लिख दो. So that will be equal to 0.5 into this value will be equal to 30 into √2, isn't it? So this will be 1/2, and this is 15 times of root.
isn't it? So it is 15 into 1.414. So approximately कितना हो रहा है देख लो. 21 Newton meter. That will be the answer. Then sure. थोड़ा लेंथी दिख रहा है पेपर में, और कैलकुलेशन अगर ज्यादा करोगे तो लिखने में टाइम लग रहा है शायद. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. The kinetic energies of two similar cars A and B are 100 joule and 225 joules respectively. ठीक है. On applying brakes, car A stops after 1000 meters and car B stops after 1500 meters. If force FA and FB are the forces applied by the brakes on cars A and B. On cars A and B. Then ratio of force A divided by force B is how much? Options are 1/3, 1/2. Third option is 3/2. The fourth option is 2/3. Anyone? पहले क्वेश्चन समझो अच्छी तरह से. The kinetic energies of two cars he has given me. So मेरे पास दो कार्स है. This is car A and car B. कार A के पास kinetic energy जो है, the kinetic energy of the car A kinetic energy of the car A कितना है बेटा? Kinetic energy of the car A is 100 joules. Kinetic energy of the car B कितना है मेरे पास? 225 joules. On applying the brakes A, car A stops after traveling a distance. इसका distance दे रखा है 1000 meters. और उस पे force है FA. And this will stop after it traveling a distance of 1500 meters. और इसके ऊपर force है right now for me FB. इन दोनों का ratio पूछ रहा है. Okay, so जब change in kinetic energy दे रखा है, displacement दे रखा है, I can apply the force right now for me what beta? Work done by all forces. I can use the work energy theorem. Work energy theorem लगा रहा हूँ. Work done by all forces must be equal to change in kinetic energy. तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय यहाँ पर तो फोर्स है, नो अदर फोर्सेस आर देयर, दैट मस्ट बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल. ठीक है ना. यानी वर्क डन बाय द ग्रेविटी एनी हो तो जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सामने होगा, ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम 90. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी जीरो. यानी वर्क डन बाय फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले. वर्क डन का फॉर्मूला कितना है? फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट. दो केसेस है, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट बॉडी मस्ट बी इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, राइट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट.
So इसका change in kinetic energy कितना दे रखा है? Traveling a distance of your how much Fermi? 1000 meters. The kinetic energies of your A and B. First की kinetic energy कितनी है बेटा? 100 joules. Force of A, displacement of your A. Force of B into displacement of the B. इसका कितना है? 225. This is equation 2. This is equation 1. दोनों का ratio ले लो. So if I'm taking the ratio, FA divided FA into your SA2 divided by FB into your SB is equals to 100 divided by 25. यानी FA divided by FB will be equal to 100 into displacement of the B divided by 225 into displacement of your E. Yeah. So this will be equal to 100 into displacement of the B कितना है बेटा 1500 divided by this one is 225 multiplied by displacement of this one is 1000. इधर 0 चले गए. This will be equal to 100 into 15 divided by 225 into your 10. Done. अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है देखो. ये कितना बन जाएगा 1500 divided by this one is 225 multiplied with your 10 कितना हो जाएगा 2250. ये वाला चला गया. It is 150 divided by 220 आ गया. देख लो कितना आ रहा 150 divided by 225. टू बाई आ गया. Sure. This is the best option.